learning and artificial intelligence. So I also have some working experience in IT, specifically speaking, computer networks and cyber security, and some a little software development. So this is my little background for those of you who are new. Now, before we actually get on with the discussion, it is strange that there are two hands already raised. So, and they would like to ask some question. पहले तो मुझे चैट में ये चीज बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज आ रही है? Can everyone hear me? Okay, that's great. So now coming over to Mr. Ubaid, um, before we start, आप पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है सर? खैरियत ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुक्र अल्लाह का। सर मैं पहले क्लास में भी थोड़ा सा लास्ट में शामिल हुआ था ना, पिछले हफ्ते में जो क्लास हुआ था ना, पिछले दिनों में। ओके। बात थोड़ी सी मुख्तसर हुई थी। फिर सर आपका पहले दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा अपना नंबर अगर शेयर करेंगे तो फिर ऐसे कोई मसला तो फिर रब्ता रखेंगे ना। जी ठीक है। ये एक हम गुजारिश करते हैं। दूसरी बात ये ना कि मैं स्टूडेंट तो DCCS का हूँ ना। ठीक है। सेकंड क्वार्टर में अभी पढ़ रहे हैं। ये सितंबर का महीना इस क्वार्टर में लास्ट है। ठीक है। मैं भी हूँ और साथ मेरा बेटा भी है असदुल्ला। जी जबरदस्त। तो गुजारिश ये है कि अपना तो मसला थोड़ा सा ये है कि मसरूफियत ज्यादा है, उस वजह से टाइम का भी मैनेजमेंट का मसला है। थोड़ा सही भी रहनुमाई फरमाई है, क्योंकि टीचिंग लाइन में हूँ तो स्कूल दूर है थोड़ा सा। जब तकरीबन 40-45 किलोमीटर फासला है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ ना स्कूल में। ठीक है। तो उसकी भी तैयारी होती है और फिर इसके लिए भी वक्त निकालना, तो कम से कम दिन रात में तो 2 घंटे 2.5 घंटे बहुत मुश्किल से निकालता हूँ, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो मेरा मसला तो अलग है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, लेकिन बेटे के लिए तो सोचता हूँ कि इसके लिए इसके साथ मैं याफ्स शामिल करूँ साथ, या ये DCCS का डिप्लोमा पूरा करके इसके बाद कुछ ऐसा करें, क्योंकि यानी अफोर्डेबिलिटी का भी थोड़ा मसला होता है। लेकिन इसी में हमारे रहनुमाई फरमाए कि हम आयात से अगर इसके साथ शामिल करना चाहते हैं तो क्वार्टरली बेस पे करें या हाफ ईयर पे करें, या इसी तरह कोई आप रहनुमाई फरमाए ना। तो इस सिलसिले में मैंने गुजारिश की आपसे। अल्लाह खुश खुश रखे, और तो बस अपना नंबर अगर शेयर करेंगे तो फिर राबता रखेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। उबैदुल्लाह साहब ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। मैं इससे पहले आपसे ये पूछ लूं कि आपका बेटा जो है उसका नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? उसने सर एकेडमिक तो एंटर किया है, फिर जो है ना ये लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है ना, मैं समझ गया। हाँ उसमें उसने किया है। अभी जो है ना टेक्नोलॉजी लैब से। हॉस्पिटल का रोस्टर रह गया, वो अभी करेंगे इंशाल्लाह इस महीने में। ठीक है। ठीक है। तकरीबन बैचलर के बराबर है, BS के बराबर है तकरीबन। मैं समझ गया। तो जी जी एक तो ये कि वो थोड़ा सा बच्चे से पूछिएगा वो कहीं कंफ्यूज ना हो रहा, बिकॉज ज़ाहिर है कि इससे पहले वो लैब टेक्नीशियन था, तो वो कि उसने एजुकेशन लिया है, तो वो लाइन थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड है। और ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग की ओरिएंटेशन है। तो थोड़ा सा जी ऐसा ना हो कि वो बेचारा बच्चा तंग हो रहा हो। एक तो मैं ये जो है ना वो उसे जी जी दूसरी बात ये है कि आपकी बातचीत से ये लगता है कि बच्चा अभी जो है ना वो यंग है। ठीक है जी। तो जी और उसने ऑलरेडी बड़ा अर्ली इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। जी देखें, बात यह है कि काम जो है ना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ही होने हैं। तो आप जी अगर मेरी ओपिनियन में अगर आप उसे दो डायरेक्शंस में अभी से ही लगा देंगे, तो वो उसका फोकस जो है ना वो थोड़ा सा लूज होगा। अफोर्डेबिलिटी के भी फैक्टर है, ये नहीं कि आप एक ऑलरेडी पे कर रहे हैं, एक और जो है ना वो साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बच्चे के लिए भी मुश्किल होगी। मैं जाती तौर पे ये आपको मशवरा दूंगा कि आप उनको
DCCS कंप्लीट करने दें, उससे पूछें कि जी वो अब कितना कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करता है, क्या वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकता है, डज ही थिंक कोई जो ना कोई उसे समझ आई है, और एंड इफ ही फील्स कॉन्फिडेंट, एंड इफ ही जी से टेल्स यू कि जी अच्छा लगा और मुझे, और मैं एक नई फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सो परहैप्स दैट वुड बी द टाइम। DCCS में वैसे भी थोड़ा सा रिलेटिवली कम टाइम लगता है, तो आई थिंक जी। कि वो आ सकता है। मैं अगर मतलब सेल्फिश हूं तो मैं कहूंगा नहीं नहीं जी सारे जाएं और फटाफट जो है ना वो AI ऑप्स का डिप्लोमा खरीद ले, बट हाँ मेरे मोस्ट। ख्याल में वो जो है ना वो ठीक एडवाइस नहीं होगी, वो ऑनेस्ट एडवाइस नहीं होगी। जो जी ऑनेस्ट जी। एडवाइस है मेरे ख्याल में वो ये है कि आप उसे एक पे फोकस करने दें, जब वो कंप्लीट हो जाता है देन ही कैन थिंक ऑफ स्विचिंग टू अनदर साइड। जी ये भी मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन आपसे मशवरा बिल्कुल जी, अल्लाह आप खुश रखे। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बिल्कुल सर। ठीक है, सो कमिंग ओवर टू मिस्टर फहद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सर मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं एआई ऑप्स का डिप्लोमा एनरोल करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह। मुझे आपसे पूछना था कि मैं अपना करियर जो है साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहता हूँ आगे। ओके। तो ये डिप्लोमा में साइबर सिक्योरिटी भी है, और भी चीज़ें हैं, डेवऑप्स है, सिसॉप्स है। तो ये डिप्लोमा क्या सही है मेरे लिए? जी मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में ना देर इज नो फील्ड जिसमें कि AI जो है ना वो नहीं होगी। जी जी इनफैक्ट जी। इस वक्त भी अभी कोई फील्ड ऐसी रह नहीं गई है कि जिसमें यानी जहां पे कोई टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का अमल दखल है वहां पे AI जो है ना अपना किरदार अदा कर रही है। जी जी सर, ठीक यू है। आर ऑल राइट। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी इज वन फील्ड जहां पे कि AI की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन अभी भी हो चुकी है, फर्दर भी होने जा रही है। फॉर एग्जांपल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, जी फॉर जी एग्जांपल जो है ना वो जीरो डे अटैक्स जो है जी ना जी उनकी मिटिगेशन, फॉर एग्जांपल जो आपकी मॉडर्न फायरवॉल्स हैं वो AI जी इनेबल्ड जी। हैं। है। ठीक है, जो बिहेवियरल एनालिसिस करती हैं। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली AI की एप्लीकेशंस में आ रही हैं। सो यस। मेरा ये ख्याल है कि साइबर सिक्योरिटी आप अभी भी कर सकते हैं विदाउट AI, बट अगर आप AI के साथ करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और मेरे ख्याल में स्ट्रांग हो आपको जाएगा। जॉब, हाँ आपको यानी मेरे ख्याल में आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर डेवलप होगी, और कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर जॉब्स भी जो है ना वो बेहतर होती जाती हैं। यस। अच्छा सर, आप ठीक है। मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस डिप्लोमा इनरोल करने से पहले कौन कौन से अपने फाउंडेशन और इसेंशियल्स जो हैं वो स्ट्रांग करूं या नहीं? देखिए मैं यूजुअली लोगों को सिर्फ जो है ना वो दो चीजें, बल्कि आई वुड अब मैंने उसमें तीन चीजें इंक्लूड कर ली हैं। देर आर ओनली थ्री थिंग्स दैट यू शुड नो हाउ टू डू। वन इज मैथमेटिक्स, ओके सर। द अदर इज जो है ना वो लैंग्वेज विच मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, द ओके। थर्ड इज एथिक्स। ठीक है ओके। जी। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो तीनों चीजें बेसिकली लिंग्विस्टिक का पार्ट है। गलीलियो ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड रोट द यूनिवर्स। यस। ठीक है जी। देन इंग्लिश इज द लैंग्वेज इन विच मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेट्स। ठीक यस, है। यू आर राइट राइट सर। And ethics is the language through which human beings actually convey to one another their belief system, their values. ठीक है। तो ये तीनों चीजें, आपका आप जो किस तरीके से बात करते हैं, आपका रख रखाव, आपका उठने का अंदाज, इंटरव्यू में आप किस तरीके से अपेयर हो रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। और आजकल इन चीजों के ऊपर एम्फोसिस काफी ज्यादा है। पर आर यस। यू आर टीम, आप मुश्किल में साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट प्रपोज किया है जो इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे। हम रिज्यूमे जनरेशन जो है ना वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन बना चुके हैं, जिसमें कि वो उनका डेटा हम जो है वो पुल करेंगे फ्रॉम आवर ओन रिकॉर्ड कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और उसके हिसाब से उनको एक टेलर मेड बना के देंगे रिज्यूमे। बट अब मैंने उसको इन्हेंस किया है कि जब किसी स्टूडेंट ने किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो ही कैन एक्चुअली कम ऑन आवर वेबसाइट, authenticate himself, enter the details of the company in which he is trying to get the job. ठीक है जी। आंसर some basic questions,
और उसके ऊपर हम उसको एक कंप्लीट जो है ना वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि टेक्निकल सवालात भी होंगे, जिसमें कि जो है ना वो हम उसकी सीवी को भी दोबारा से एक दफ़ा जो है ना वो अपडेट भी कर देंगे या उसको रिव्यू कर देंगे कि किसी सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। हम उसमें उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है कि जो है ना वो करेंगे। हम उसमें उसकी जो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सैलरी निगोशिएशन कैसे होती है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि आपको जाने से पहले पता तो हो कि किस कंपनी में वो कंपनी करती क्या है, उसके बारे में आप पढ़ के जाएं। सो जी इसके अंदर आप देखिए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट और मैंने जो है ना वो एचआर रिलेटेड इंटरव्यूज और इस किस्म की चीज़ों की जो है ना वो बातचीत की है। सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सेम फैक्ट। सो आपने अगर आपने आपको करना है, यानी यू यू वांट टू हैव अ स्ट्रांग फुटिंग, तो मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश एंड एथिक्स, ये तीन चीजें जिसमें यू ओके नीड टू। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी अहमद बिलाल साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं अभी तकरीबन 2 महीने पहले जो एआई ऑप्स का कोर्स है उसमें एनरोल हुआ हूँ सर। अच्छा सर, मैंने जो एआई का कोर्स है वो मैंने गो थ्रू किया है सर। तो उसमें मुझे कुछ बेसिक्स चीज़ों का तो पता है। मैंने सुना हुआ है, इतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं बैकग्राउंड या मैंने जो पढ़ा है तो वो ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी पढ़ी है सर। अच्छा, मुश्किल भी सर यही लगता है, एआई लगता है। लेकिन सर एआई ऑप्स को जब आप मतलब एआई को साइबर सिक्योरिटी के साथ आप मिलाते हैं तो सर उसकी इम्पोर्टेंस भी हमें पता है। तो अभी सर हम इसलिए एआई ऑप्स की ज़्यादा तरफ ज़्यादा आए हैं सर के। असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पिछले आंसर ने आपने कहा मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, तो ये बताया सर कि जब मैथमेटिक्स का कोई बैकग्राउंड ही नहीं हो तो जब कोर्स शुरू करे क्या उसी उसी जितना आपने पढ़ा है क्या वो इनफ है या बिल्कुल हमने बेसिक से जाके पढ़ना है? पहले सर आप ये क्वेश्चन का सर आंसर दे दें। Okay, so I think everyone in the room can understand English because there is perhaps someone from abroad who has requested to have our conversation in English so that he can also understand what is going on. So will it be okay if I try to communicate in English as long as I don't forget to have conversation? यस सर, ओके। Okay, that's fine. So the question that was asked is that the person has a background in cybersecurity and he wants to also take AI ops. He's a little afraid that although he understands that there is some bridging between AI and cybersecurity going on at the moment, and there is a lot of relevance between the two fields, but whether it will be a right decision to get to AI ops or not. Did I cover the question correct? Fahad यस sahab, सर, यस okay. सर। Okay. So in my point of view, actually, AI ops or AI per se and cybersecurity are a very deadly combination. Right now, the world is actually experiencing two kind of phenomena. One is the AI explosion. Everything is now using AI in some form. For example, if you are government servant, not even your lower division clerk is typing the letters himself. No one is doing that. So everyone is actually trying to use Chat GPT or some kind of that thing. Your software developers, they are not actually developing the software from their brain. They are actually using AI. So one is the phenomena of AI explosion. The other phenomena is the fact that people are afraid of uh, getting into the hands of cyber criminals. So there every now and then there is some incident related to someone who is losing money to these individuals. Large corporations are experiencing cybersecurity attacks. And AI has actually a lot to offer to cybersecurity. And the vice versa is actually not true, which means that AI can actually help cybersecurity to improve, but cybersecurity in return cannot offer much to AI to improve itself. If you are a cybersecurity person, or you want to have a career in cybersecurity, I would actually advise that
AI is going to help you in achieving your career goals. So that's my take on this. I think the previous question was also of the similar sort, and I think I have covered it in detail. Okay, so now we have Abdullah who wants to ask a question. Assalamu alaikum, sir. Ji Abdullah. Sir, my question is about the course of diploma in cyber security. Diploma in cyber security, cloud cyber Okay. security. Sir, my question is that sir, I am doing Linux deep dive in cloud cyber security and in the last 30 lectures are about bash scripting and Docker. And I cannot understand it easily as I have less knowledge about bash scripting and Docker. Please advise me, sir, that I think I should take bash script and Docker deep dive from diploma in DevOps and cloud advancement first to understand the Linux bash scripts lectures easily. So, sir, what do I do? What should I do? I have to take the diploma in cloud advancement lectures, Docker and bash script deep dive also, then start the 30 lectures, or I should go for it. Abdullah, there's some disruption on your side. And the second thing is, if you don't feel confident in talking in English, you can actually present your question in Urdu. And I wouldn't force you to do that, so that at least you can ask your question well. So I would request that you repeat your question in Urdu. आप उर्दू में दोबारा पूछ लीजिए, और थोड़ा सा आप माइक को अगर बेहतर कर सकें तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, because I couldn't actually comprehend the full gist of your question. Okay, sir. Sir, am I clear now? Sir, am I clear? आपकी आवाज में एक अजीब सी वो हॉलोनेस सी है, बहरहाल आप पूछिए, मैं I'll try to get along you. सर मैं थोड़ा स्लो पूछता हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा है ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लिनक्स डीप डाइव जो कि डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के अंदर लास्ट 30 लेक्चर्स है जिसके बैश ठीक है। स्क्रिप्टिंग और डॉकर के हवाले से है सारे। ठीक है। तो सर मेरा नॉलेज डॉकर और बैश स्क्रिप्टिंग का इतना नहीं है ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसके लेक्चर मेरे कंप्लीट भी होने वाले हैं, वो काफ़ी ईजी था मेरे लिए, उसका नॉलेज है मेरे पास पहले से ही। लेकिन सर डॉकर और बैश स्क्रिप्टिंग का नहीं है। तो मुझे एडवाइस दी गई थी कि मैं क्लाउड साइबर सिक्योरिटी को 15 to 20% कंप्लीट करूं, फिर किसी और लेक्चर की तरफ जाऊं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि डिप्लोमा इन डिवॉप्स और क्लाउड एडवांसमेंट में जो बैश स्क्रिप्ट डीप डाइव और डॉकर डीप डाइव का कोर्स है वो मुझे पहले ले लेना चाहिए, ताकि मैं लिनक्स के बकाया 30 लेक्चर्स, लिनक्स डीप डाइव के 30 लेक्चर्स को इजीली कंप्लीट कर सकूं। मैं समझ गया। ओके, सो माय आंसर इज दैट जो लिनक्स डीप डाइव है, Linux is an operating system, and everything else in the computer is actually built on top of the operating system. And bash scripting is actually part of Linux, because there is a shell. Shell is basically a command interpreter which is designed in every Linux system. यानी Unix based system जितने आते हैं उनके अंदर एक shell interpreter आता है जिसके कुछ built-in commands होती हैं operating system की, through which you can actually do some work. विंडोज में भी आता है, जैसे कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो एक्चुअली शेल इंटरप्रेटर है, और अब उसकी जगह के ऊपर पावर शेल आ गया हुआ है। सो अगर मैं आपके लिए तरतीब बनाऊं तो यू शुड फर्स्ट लर्न लिनक्स डीप डाइव, देन बैश स्क्रिप्टिंग, एंड देन डॉकर डीप डाइव। Sir, I also have a second question. जी। Can I? Sir, this is the last one that when we open the portal of our courses, we get a portal of how to study this diploma in AI ops. ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, अगर आप दोबारा कह सकें प्लीज। सर पोर्टल जब ओपन करते हैं हम तो हमें मिलता है एक कोर्स जो कि है हाउ टू स्टडी एआई ऑप्स, हाउ टू स्टडी दिस डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। ठीक है। ऐसे ही है सर।
सर ठीक इसके है। अंदर जो कि कंटेनर एक्सेस लैब्स है, आउट एक्सेस कंटेनर बेस्ड लैब्स और लिनक्स डीप डाइव में भी यही लैब्स है, इसलिए लैब्स हम किस तरह करेंगे और क्या इसका फॉर्मेट होगा, कब इस लैब्स को कब करना शुरू करें, क्योंकि अंदर प्रोग्राम के लिए भी 250 लैब्स करना कंपलसरी है। देखिए, जब आप एटलीस्ट लिनक्स और बैश कर लेते हैं ना, आप उसके बाद बड़ा कन्वीनियंटली लैब्स के ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज आप जहां भी जाएंगे ना आपको लिनक्स और बैश की एनवायरनमेंट मिलेगी. So whenever you try to actually jump into the labs, you will get this Linux environment. You will have to deal with the bash commands. So that will become a challenge if you have not taken these courses. So I would advise that, for example, you take some of the lectures on Linux and then try to do some labs, because there's no sequence actually in which you have to take the things. You can decide upon your own sequence. So you can do that. So after taking few lectures of Linux, you can check uh, uh, the difficulty level of the labs, complexity of the labs, and then you can decide whether it suits you or not. If it doesn't suit, then continue working on Linux deep dive, and then Bash. And after Bash, I think you can solve most of the labs without much problem. So this is how I think you should be taking your course. इसके अंदर जो एक्सेस कंटेनर बेस्ड लैब्स का मतलब दिए हुए एक वीडियो दी हुई है, तो इससे आप देखें कि आप हैंड्स ऑन लैब्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसी को फॉलो किया जाए तो लैब्स एक्सेस हो जाएंगे इजीली। जी जी, हो जाएंगी, कोई कोई मसला नहीं है. और अगर कोई इफ यू फेस सम प्रॉब्लम, तो यू कैन ओपन अ टिकट विद अस ऑन आवर वेबसाइट, और हम उसके ऊपर फिर आपको जो है ना वो एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट मैनेजर है, he can actually get along with you, share your screen, see where you are stuck, and he can provide you a better guidance as to what to do. Because at that point your problem will also have been more crystallized. आपका प्रॉब्लम जो है ना आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ. तो आप अच्छे तरीके से जब सवाल पूछेंगे तो आपको उसके जवाब भी कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही अच्छा मिलेगा. Okay, so moving towards फरीद खान. जी फरीद साहब पूछिए. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम. सर मैं फरीद खान एसीसीए का स्टूडेंट हूँ, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है. सर मैंने आपके कोर्स के बारे में काफ़ी यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो मैं बात काफ़ी मतलब मेरा इसकी तरफ जहन बढ़ा है कि ये कोर्स करना चाहिए, फास्ट ट्रैक है मतलब आगे मुस्तकबिल बनाने के लिए। तो मेरी एक सिस्टर भी है, उसने रिसेंटली जो है ना प्री इंजीनियरिंग में एफएससी की है। तो हम दोनों इसके कोर्स के बारे में मतलब सर थोड़ा जानना चाह रहे थे कि इसमें हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो अगर इसके बारे में आप थोड़ी सी गाइड कर दें हमें। Okay, since you are already taking ACCA, so अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि what is the completion status of ACCA? फुल फॉर्म एसीसीए की सर? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीशन स्टेटस क्या है आपका, कितना कर सर लिया आपने, कितना 9 पेपर हो गए हैं सर। और टोटल कितने होते हैं इसमें? 17। एफएससी के बाद 17 होते हैं। तो आप ये इसको कंप्लीट करना चाहते हैं ना? जी सर, इसको तो मैं स्किप नहीं करूंगा, पर यह है कि ये थोड़ा सा टफ है, इसमें टाइम लगेगा। तो मैं चाह रहा था कि साथ अगर ये भी हो जाए। और अच्छा, एक मैं सिंस यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ प्रोफेशनल एजुकेशन, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि आप दो कश्तियों का सवार जो है ना डूब जाता वो है। उसके हाँ वो डूब जाता है. अच्छा, तो सर सिस्टर ने भी मेरे का हाँ जी. मेरी सिस्टर ने भी यही कोर्स करना है, उसने रिसेंटली एफएससी किया है, वो आपके कोर्स से मतलब काफी मुतासिर हुई है। उसने हाँ, यूट्यूब पे वो शी वीडियोस कैन भी। एक्चुअली टेक, क्योंकि वो एक कर रही होंगी ना, जी तो वो आई अभी। थिंक हर इट इज पॉसिबल. तो सर आप बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरह?
देखिए, जो स्टार्ट है ना आपका, स्टार्ट आपका होना चाहिए प्राइमरीली फ्रॉम मैथमेटिक्स कोर्सेज। उस वो जो ना उसमें 4 कोर्सेज जो हैं मैथ के, जो कि मैंने ही कवर कराए हुए हैं, जिसमें कि लीनियर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, और थोड़ा सा लिमिटेड सा कैलकुलस है। सो ये वो जी। चीजें हैं जो कि ना मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स जो रिलेटेड टू एआई है उसको कवर अप करते हैं। सो सही। आपको सबसे पहले जो ना वो मैथ के कोर्सेज लेने चाहिए। सर मैंने आपकी टीम मेंबर से बात की थी, मतलब वो कोर्स का उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया था, फीस स्ट्रक्चर वगैरह। ये जो आप लीनियर जब ये उसमें है या ये अलग है उससे? नहीं नहीं नहीं, ये उसी के अंदर शामिल है, ये अच्छा, डिप्लोमा ये में उसी के अंदर है। और सर ये मैक्सिमम अगर 5 to 6 और अगर बच्ची दे तो मतलब ये कितने मंथ का कोर्स है आपके लिहाज से, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है इसमें? देखिए, हम ये 18 मंथ्स की जो है ना वो एक्सेस देते हैं। ठीक। ठीक है जी। और इन सम केसेस जो है ना वो हम जो जो मुझे उसकी कंडीशंस एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट वी आल्सो गिव एन एक्सेस ऑफ 24 मंथ्स विच मीन 2 years। सो मेरा ये ख्याल है कि जनाब 18 मंथ्स लगेंगे ये काम करने में। सही। तो सर एक चीज पूछनी है ना, जैसे एआई में तो रोज बरोज सर चेंजिंग्स होती रहती है, नई चीज आती रहती है। जी। तो इन फ्यूचर आप मतलब साथ सपोर्ट करते हैं? अच्छा, पहली चीज अजीम साहब, आप नहीं, आप कौन बात फर, कर, अजीम साहब बात फरीद करें। फरीद खान, फरीद फरीद खान। फरीद फरीद खान। सो फरीद साहब, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि जब आपको एजुकेशन जब भी दी जाती है ना, तो एजुकेशन में आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताया जाता, आपको इनेबल किया जाता है कि जब आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जी। ठीक है जी। और दूसरे, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो आपको कोई क्लासरूम सेटिंग में नहीं पढ़ाएगा। उसके बाद जो है ना वो जो एक सेइंग है ना कि अ बुक इज अ बेस्ट फ्रेंड, तो वो सेइंग जो है ना उस वक्त आपको ट्रूली नजर आना शुरू होगी कि व्हाई इज अ बुक योर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जिस यस। सोल्यूशन का आंसर टुडे इन टुडेज मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यू कैन से दैट गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड और चैट जीपीटी इज योर बेस्ट फ्रेंड और बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो बेसिकली है, ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइंड है कि ये एआई और मशीन लर्निंग की बेसिक्स को यूं कवर करता है कि कल को अगर उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं तो आप इन्हीं को यूज करते हुए इन स्टेप्स के ऊपर उसको बिल्ड कर सकते हैं। It's not that whatever you read today will be outdated or useless tomorrow. No, whenever we will talk about AI or machine learning, we will have to start it from here. जैसे अगर किसी ओके। बच्चे को एसीसीए में जाना है, अकाउंटिंग पेपर देने हैं, तो उसको काउंटिंग प्लस माइनस डिवाइड ये वाले उसको जो है ना वो बेसिक जो ऑपरेशंस है वो उसको उसी तरीके से सिखाने पड़ेंगे जिस तरह जो है ना वो आज से 100 साल पहले भी सिखाए जाते थे। दैट हैज नॉट चेंज्ड। मतलब सर सेम लाइक एसीसीए से, एसीसीए में भी हर 6 मंथ बाद टैक्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो हमें वो अलग से नहीं पढ़ाते, मतलब वो बस बता देते हैं कि ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू सेम वही टाइप है आपको, मतलब बेस आप पक्की कर देते हैं। एग्जैक्टली, हमारा काम है फाउंडेशन बिल्ड करना और उसके ऊपर खूबसूरत इमारत तामीर करना, जो है ना वो हम आपको इस काबिल बनाते हैं कि वो खूबसूरत इमारत आप खुद तामीर कर सकें। ठीक है। और सर इसमें अल रज़ाक प्रोग्राम के बारे में आपके मैंने सुना था। जी, अल रज़ाक प्रोग्राम कवर्स लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि हम जो है ना वो आपको रिज्यूमे जनरेशन, आपको इंटरव्यू प्रेपरेशन कराते हैं, जो है ना आपको जो है ना वो जॉब्स के लिए रेफरल्स देते हैं, आपको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। सो उसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। अगर जो मेरे को होस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं तो ही कैन शेयर द लिंक ऑफ आवर वेबसाइट, और उसके ऊपर से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको उसमें क्या चीज़ें जो है ना वो मिल अवेलेबल हैं। सर एक लास्ट चीज कंफर्म करनी है, जी। ये जो इसका एग्जाम जो होता है वो आपकी इंस्टीट्यूट लेती हैं या अलग से कहीं से, जैसे एसीसीए का जो ये साहब है, आप पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके दे सकते हैं जो एसीसीए के पेपर कंडक्ट करती हैं, तो इसका क्या हिसाब है सर? आपके इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो आप ही के इंस्टीट्यूट में पेपर देगा?
जी, हमारे जो इस वक्त असेसमेंट्स हैं वो सारी ऑनलाइन हैं, यहीं पे होती हैं। और जो जो आपको रेलेवेंट कोर्स कवर कराया जाता है उसी से रिलेटेड फिर जो है ना वो एमसीक्यूज और असाइनमेंट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको दी जाती अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। हैं। ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी अजीम साहब आप। Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। I am Azim. Sir, I am the student of DevOps in cloud computing. Now I am in the state of 15% of DevOps and around 13% of cybersecurity. Okay, that is my introduction. My first question is that, sir, most of the lectures I have leave of you. So can you can you share any resource so that I can get this recording? My second question is that currently I am working at payment industry. That is the company of switching. We provide the payment services at Pakistan, and you know one of the company that have the PSO license. Uh, I am currently I am working as a network architect, solution architect. So uh, my question is that how I can uh, involve into the different operations of my company because I am the part of the operations BAU, that is my JD. But how I can involve into the governance, into the security, into the SOC, how I can involve? My question is clear or not, sir? Okay, I'm pretty clear about your question. So basically you have two questions. Coming to your second question first, that you are actually an employee of a company and you are a network solution architect. And now actually you want to know how actually AI can be helpful in your different tasks, for example, cybersecurity, etc. Now I'll give you a very simple example. Rest I think you can further search yourself and find it out. One of the challenging jobs for any network engineer is related to uh, the logs analysis. In fact, you would definitely have configured a syslog server, and perhaps you would also have an intrusion detection system or a SIEM solution, security incident event management solution like QRadar, like Splunk, etc. So I think one of these systems must be in your overall IT infrastructure. So how do you do the logs analysis? The older method is that actually a network administrator or a cybersecurity administrator is required to go through all of those logs daily. And you know that even if you have, let's say, 50 odd network devices with, let's say, 200 odd users or computers, they would be generating tremendous amount of logs. And it is nearly impossible for any user to actually go through those logs. And that is where the problem occurs. If the system is going into a problem, you will not be able to find it out unless you are reading the logs. So how does AI actually help to make your job easier? So suppose you have your own fine-tuned system or your private system installed within your company premises. You take out the logs, you feed it to that language model, and you start asking specific questions. For example, you can ask, do you find any cybersecurity related incident? Do you think that the performance of the system is going down? Identify the potential weaknesses in the system configuration. So these are the areas in which you can easily apply AI within your own framework, and it will be immensely helpful to you.
Now, what was your first question? So you have covered 15% of cybersecurity and perhaps 30% of DevOps, and what was next? उससे आगे आपने क्या पूछा? Okay, I think ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं. So I think मैंने उनके एक सवाल का जवाब दे दिया. Now, एक सवाल अबू बकर साहब हैं जो पूछ रहे हैं कि I'm a chemical engineer currently studying AI ops. I have a question about how AI can be implemented in the fertilizer industry, especially in the field. अच्छा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल है. फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एक हमारे पास जो है ना वो पीएचडी थीसिस जो है वो लेकर आए हैं एक स्टूडेंट, और उसमें वो कर ये रहे हैं कि दे आर टेकिंग द सैटेलाइट इमेजरी ऑफ द वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स टेकन बाय द सैटेलाइट दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ दैट एरिया. ठीक है जी. सो अभी तक पाकिस्तान में आपको पता है कि गंदम जो है, वीट, उसकी कैसे पता चलाते हैं कि जी कितनी पाकिस्तान में वीट जो है ना वो पैदा, प्रिडिक्शन कैसे होगी? उसकी प्रिडिक्शन ऐसे होती है कि हर जो है ना वो जिले के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ज़राअत का. ज़राअत के डिपार्टमेंट में आगे कुछ उनके एक दो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि जो है ना वो आंखें बंद करके पिछले साल का जो डेटा होता है उसी के अंदर कुछ छोटा मोटा प्लस माइनस करके एक एस्टिमेट भेज देते हैं. देयर इज नो साइंटिफिक मेथड ऑफ इवन कलेक्टिंग द डेटा that how much wheat will be produced in our country, and that is why कि हमारे मुल्क में डिजास्टर्स होते हैं कि अपनी गंदम जो है ना वो बेशुमार पैदा हो रही होती है. आप एक तरफ कह रहे होते हैं कि इस दफा तो बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, और दूसरी तरफ आपका जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है क्योंकि आप जो है वो आप लैक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से एक्स्ट्रा गंदम जो है ना वो मंगवा के अपने मुल्क में रख लेते हैं. सो सिमिलरली फर्टिलाइजर्स के केस में यू कैन एक्चुअली सी द इम्पैक्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स ऑन द प्लांट्स. कि जी आपने एक टाइप का फर्टिलाइजर लिया, डाला, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग कि अच्छा जी क्या जो है ना वो बिहेव कर रहा है. उसके साथ आप जो है ना, अच्छा सॉइल के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप उसमें जो है ना वो देख सकते हैं कि जी जो है ना वो सॉइल कैसा बिहेव कर रही है. सॉइल की पिक्चर्स दी जा सकती हैं जिससे कि विजन एनालिसिस हो सकता है. सॉइल के टेस्ट किए जा सकते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर नॉर्मल रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन टेस्ट किया जा सकता है. ठीक है जी. सॉइल को चेक किया जा सकता है कि वो किस किस्म की क्रॉप के लिए ज्यादा जो है वो यूजफुल होगी. So all these are actually use cases of the uh, of AI in chemical industry and in particular the fertilizer industry. So somebody is saying that I require your sessions recording. Sessions की recording जो है ना वो पड़ी हुई होती है. I think Huzafa is with me. He can share the link और आप उसको जो है वो देख सकते हैं. Okay. So now, if we don't have the any more questions, ज़्यादा time तो हमारा questions में ही निकल गया. But nonetheless, मुझे can anyone बल्कि I would like all of you to confirm by raise of hand कि जिन लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा ये नहीं अटेंड किया था, जो पिछला लाइव सेशन नहीं अटेंड किया था और ये वाला लाइव सेशन अटेंड करें. कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी ये पहला अटेंड कर रहे हैं? 7. सो बाकी वो लोग हैं जिन्होंने के पिछला ओके 8 6 it's not getting stabilized. So I can roughly see it's नहीं ज्यादा हो गए, 10 हो गए. So out of total 24 participants जिसमें के 2 मैं और उज़ैफा हैं, there is roughly 50% okay 11 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने के पिछला सेशन अटेंड नहीं किया था. Now this actually is a continuation of the previous session. 12, so more than 50%. So now another so that's quite a lot of number, and in that case it would be actually useless if I try to cover the part 2 without people having understood the part 1.
Okay, so somebody is saying that I'm a computer engineer student. How can I start a career in AI and DevOps? I think if you're a computer engineer and you still don't know how to start your career in AI and DevOps, तो आपने seriously यूनिवर्सिटी टाइम अच्छा नहीं किया हुआ। अवैस, कैन यू कंफर्म आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है? और आपका जीपीए वगैरह क्या था? हाँ, बाकी सब लोग अपना जो ना लोअर कर सकते हैं हैंड। ओके, अवैस इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। Okay, so you are basically not a computer engineering, you are an ICS student, that would say. Okay, Barrier University and first year computer engineering student. So they will teach you all of these things. They will teach you AI. They will teach you DevOps. Now, how will they do it? वो आपको AI के मशीन लर्निंग की कोर्सेज कराएंगे, वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोर्सेज कराएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो आई बिलीव कि फर्स्ट ईयर में जो है ना वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स आप जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है जी। एंड उसके बाद आप जो है वो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करेंगे, डेटाबेसेस के कोर्सेज करेंगे, डेटा माइनिंग के कोर्सेज करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर एक्चुअली डिजाइंड। HTML CSS के कोर्सेज करेंगे, वेब डेवलपमेंट, गेम डिजाइन, इस तरह के कोर्सेज आपके पास सारे जो है ना वो आएंगे। दैट वुड मीन कि आपके पास एसेंशियल बैकग्राउंड जो है ना वो आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और AI और मशीन लर्निंग का भी आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ इफ यू आर इन हरी एंड यू वांट कि जी आप जो है वो इसके साथ ही कुछ करें, दैट केस आप AI ऑप्स का डिप्लोमा ले लें और हमारी वीडियोस को लेते रहें, क्योंकि हमारे एग्जाम्स तो नहीं है, MCQs हैं जो साथ साथ आते हैं, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा और आप वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि जी आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर जो ना कंप्लीट होता है, समर ब्रेक आती है, किसी कंपनी में चले जाएं और उनसे कहें कि जी आई वांट टू वर्क एज एन इंटर्निंग। कोशिश करें इंटर्नशिप लेने की, उन्हें कहें कि जी मुझे कोई पैसे ना दें, आई डोंट नीड एनी मनी, जस्ट मुझे जो ना वो काम के ऊपर जो ना वो काम सिखाएं। और अगर आपको वो चाय बनाने का भी काम देते हैं तो करें, और उनसे रोजाना जाके पूछें कि जी टीच मी समथिंग, मुझे कोई काम दे, मुझे बताएं मैं क्या करूं। सो होगा ये कि एक दो दो महीने की जो आपकी समर ब्रेक है उसकी इंटर्नशिप के अंदर यू वुड हैव लर्नड लॉट, एंड आई थिंक यू वुड बिकम बेटर देन अदर्स। सो सेकेंड ईयर के बाद जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो वहां पे बल्कि फिर आपका जो वो रिलेशनशिप बनेगा उसमें फिर वो कंटिन्यू रहेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि फिर वो रिलेशनशिप जो वो बॉन्डिंग टूटने ना पाए, एंड यू कंटिन्यू वर्किंग एंड कीप डेवलपिंग योरसेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और AI engineer, etc. Okay, so now I'm in a fix. Should I actually now go ahead with the lecture because there is little time left? हम तकरीबन जो है ना we are already 45 minutes into the session और वो क्वेश्चन आंसर में जो है ना वो जा चुके हैं। Now those of you जिन्होंने हाथ जो है ना वो रेज हैंड किया हुआ है, do they want to ask a question or ये वैसे ही हुआ हुआ है? रईस, I cannot pronounce this name. Oluvabumi. I don't know. Obadullah. So, okay. So, unfortunately, since there are many new people around, so मुझे ये lecture थोड़ा सा can you actually pronounce your name? I'll give you the mic and you can actually try to pronounce your name to us and maybe also describe yourself a little. Yeah, hello. Thank you very much. My name is Oluwabumi, but just
better you can pronounce it as Olu, O-L-U. O-L-U is okay, yeah? Thank you so OLU. much, yeah. Okay, so which country do you belong to? O-L-U, Olu. Okay, so Sorry? which country do you belong to? UK. I'm in UK. I'm in UK, United Kingdom. Okay, that's fine. That's nice to have you here, and it's unfortunate that since most of the population here was of Pakistani origin, so I had to switch between Urdu and English, and I Yeah, it's think okay. that Thank you so much. Yeah, I understand. Thank you. Yeah, okay. perfect. Thank you. Okay, thank you. So now let's try to cover a little material related to our fine tuning or of the large language models. At least let's try to cover the concept for the ones who have come new. And in the next session, I will try to take the next session very soon. And in the next session, I will try to wrap it up and give you some practical scenarios through which it is done. So I'm going to share my screen for you guys, and so that you can see what's going on. Okay. Okay, so is my screen visible? Okay, that's great. So this is how we actually started our discussion on fine tuning. This was the picture that I placed. And if some of you remember, my first question was, can anyone of you recognize what is this picture? And what are the two arrows pointing at? Does anyone remember? Can anyone describe it again for us? Okay, CNG kit, that's correct. It's a CNG kit. And what are the two arrows? Screws, for what purpose? Okay, so pressure valve, these are the screws that control the amount of CNG or methane, compressed gas, that actually enters into your CNG kit and is then transferred to your engine. So these are the two screws. One of them, the one which with the tag of 1, this is actually for fine tuning, whereas the arrow 2 is pointing to the screw, which is for coarse adjustment. So the difference between coarse adjustment and fine adjustment is that the bigger things you do in bigger steps, and once you are satisfied with the overall structure of the things, overall scheme of the things, then you start to actually do the fine tuning or make finer adjustments. So this is just like the case that once you go out for shopping for grocery, and let's say you are buying, you ask the shopkeeper to give you 5 kg of tomatoes. So what he will do, initially, he is going to put a lot of tomatoes in the bag and will put them on the weighing scale. Now, once, according to him, he has put a lot of tomatoes which are close to or more than 5 kg, then he's going to put your bag on the weighing scale, and then he's going to actually weigh it. And then he is going to do what? He is going to either remove one odd 1 to 2 tomatoes or add few more. So that's fine tuning. So something is actually already there, and then you are trying to fix that thing you're trying to fix that thing, whatever is the deficiency there,
in that in that thing, whichever you are trying to do. Another possible example could be that, for example, there is a student of 8th grade. Now, that student of 8th grade already knows how to do the basic arithmetic. So he knows how to add, subtract, multiply, divide, take percentages, do the fractions, etc. So he has basic knowledge of mathematics. Now you want to teach him, for example, a specific domain of mathematics, suppose algebra. So what you are going to do is that his brain is already carrying the knowledge, carrying all the essential details of mathematics that is required to acquire the new skill related to algebra. So what you are going to do is you are going to build on top of whatever he already knows, and you are going to you are going to fuse the new knowledge in a specific direction of algebra. So his mathematical knowledge is getting transformed in the specific direction of, you can say, algebra. So that's the example of fine-tuning. So how does it relate? How do these real-world examples actually relate to your real to AI and the large language models in general? And also they are actually also related to the vision models, the speech-to-text models, the text-to-speech models. So all kinds of AI models are actually fine-tunable. How does it relate to that? So the story is actually quite long. There has been a tremendous effort in modeling the human language. How does actually human brain generate the language? How does human brain actually translate the language? How do we actually understand or correlate various pieces of the sentences? So this is called natural language processing. This is the overall subject of natural language processing, which tries to understand how does your brain actually interpret the meanings out of any words. For example, if I say the word mango, so what actually goes through your brain which translates that into a picture of a mango? Similarly, what is the internal representation of those words? How are the words connected to one another? For example, if I ask you a question whether which of the two out of three words are closer. So if I give you, for example, one is a calf, a cow, and a lion. So your natural answer would be that a calf is closer to the cow as compared to the lion. Now, what is the internal processing that your brain has done? What is the logic it has applied? The logic it has applied is that a calf is actually the sibling of actually the offspring of a cow, and both are actually herbivores, whereas a lion is a carnivore. Now, for example, if I repeat this example with a small change, and that is that, for example, you have a cow, a lion, and let's say a rubber plant. And I ask you which of these three words are closer. Now, in that case, you will say that a cow is closer to a lion. Why? Because both are animals, whereas the rubber plant is a tree. So this is the next question related to the language, that how actually different words have similarity. How does the brain translate the similarity between different words inside it? Then the third word is, if I read a complete sentence in front of you, I start telling you a story. For example, I say that Bilal is a good boy. He lives in a forest. Now, I said Bilal is a good boy.
he lives in a forest. How does your brain actually correlate Bilal with he? So if I state these two sentences in front of you, and even if I afterwards change the story, I say that Bilal is a good boy, he lives in a forest. Once upon a time, there was a king who used to live in England, and he had one daughter, one son. There was a dispute over the kinship, and then there were a lot of wars. And after describing all this, I ask you, where does Bilal live? And you will be able to tell that he lives in a forest. The reason is that your brain actually has this complete information stored inside it, represented in some manner, that it is able to recall this information that was provided to it quite long ago, and it is able to present that knowledge in front of you. So how does your brain do that? How does your actually brain relate different parts of the language? This is another problem in modeling of the natural language, and all of these things fall in the realm of natural language processing. Now, where do the large language models come from? Actually, there were a lot of efforts to make mathematical models which represent the natural languages in the best possible manner inside the computers, because we know that the computers actually do not have any understanding of the English, Urdu, Arabic, Hindi language. The computers actually understand only the language of numbers. That too, the modern computers actually understand the language of bits, or zeros and ones. Maybe once you have the quantum computers available in the local markets for everyone, then you will be able to say that the modern computers actually work on the qubits. But until that time, the computers actually work in the bits or the binary language. And inside the computers, actually, there is no understanding of the language going on. There is no understanding of the image going on. All it is doing is it is representing all of that information in terms of bits. It is mathematically manipulating that information in terms of binary operations. So the brain of the computer is actually CPU, and inside the CPU, the intelligent part is the arithmetic logic unit, which performs the arithmetic operations and the logical operations. So there were many attempts in modeling the language, and the successful attempts actually came about in somewhere in 2018 with the paper of Naum Shazir and many other people. So I think there were some 8 authors, most of them from Google Brain, and the paper was titled as Attention is All You Need. And in the Attention is All You Need, they presented the transformer network, and that transformer network is actually now the basis of all of these language models. And why are these called the large language models? They are called the large language models because they are a very huge, you can say that in terms of mathematics, they are a very huge mathematical function, very huge mathematical function. And you know that any mathematical function actually contains they contain the variables, they contain the coefficients of the variables, and they contain certain constants. Now, these constants and coefficients in terms of AI and machine learning, they are called the parameters of the model. And if you're taking my courses, you would understand the meaning of these in simpler terms. So if I go ahead, then actually large language models are functions that contain billions and trillions of such parameters, which means that they have
they have trillions of coefficients of the variables and the constants inside the function. For example, GPT-4 has GPT-3 in fact has 1.6 trillion parameters. GPT-4, I'm sorry. So it's 1.6 trillion parameters. And one parameter is represented by 32 bits. And if that is represented by 32 bits, it means that it is represented by 4 bytes. And 1.6 trillion parameters, you can easily assume that they are, you would require actually 6.4 terabytes of space just to store that model. Now, 6.4 terabytes is not even the space available within the most modern laptops that are available to all of us. So that is the scale of these things, and that is why they are called large language models. Now, since these are large language models, they have trillions of parameters. Those trillions of parameters are actually, how do we get those parameters? We get those parameters by training these mathematical models on the available data. So once we have these models trained on the given data, we call that as the pre-trained models. So that is why we call GPT, which is generative pre-trained. So it stands for generative pre-trained. Why? Because this is a model which has already been trained on a large corpus of data. Now, if you don't understand the meanings of training or such kind of thing, that would mean that you actually need to see my lectures in machine learning to understand what is the meaning of training. So training or pre-training is just like teaching someone mathematics up to the class of 8th, and then he already has sufficient knowledge that he can be asked to do certain basic calculations if he is employed as a shop owner. Right. So now we have defined the large language models. We have defined the parameters. We have seen that the large language models have trillions of parameters. And we also understand what is the meaning of pre-training. So now in the context of large language models, fine-tuning is that you have a language model which is already tuned, which means it understands the English language or any language on which it has been trained. It understands that language. Fine-tuning means you want to teach it a specific knowledge area so that once you have taught him that specific knowledge area, you will be able to ask some questions from it and it will be able to answer you. So if I try to relate it with the example of the student that I gave, the 8th class student who already knows arithmetics, and now in the 8th grade, he is taught algebra. So once he is being taught algebra, that is actually related, that is actually the similar process as fine-tuning a pre-trained model. So the student is already trained in arithmetic. Now you are transferring his knowledge in a specific direction. You are directing him in a specific direction. So that's called fine-tuning. So fine-tuning, why do we do actually fine-tuning? So for example, GPT has actually been trained on all of the Wikipedia, all the books that are available online in the digital form. So it has been actually trained on a very large amount of data. So it has actually a lot of carbon footprint because training a large language model actually consumes tremendous amount of electricity. So for example, now you want that your model should be able to understand the configurations of the network
devices that you have installed in your IT infrastructure. You want that it is proficient in identifying cybersecurity incidents from the system logs. So what we are going to do is you are going to give the system some more data, and that some more data will be related to, let's say, system logs. And you are going to tell the system that this is the new data that I am giving you. And these are the areas that I have already annotated, and these contain certain errors or certain indications related to cybersecurity. And then you give some additional information. What is the nature of that cybersecurity incident? What is the scale? What is the impact, etc. So once you have fed some fairly large amount of data, not as much as it consumed in pre-training. So it already understands English language. Your logs are in English language, so it understands how to read the logs. And then you teach it how to identify just the cybersecurity incidents, nothing else. So what happens is that a general purpose language model is now able to identify cybersecurity incidents. So this is the concept of fine-tuning in terms of the large language models. This is applicable to vision models also. For example, one of the companies with which I was working, so they were designing a system of virtual try-on. Virtual try-on is a system in which nowadays, if you want to buy some clothing item or some shoes, or you want to test a nail polish, you have to actually go to the shop physically, try on that piece of clothing, and then see yourselves in the mirror. Now, the modern concept is that if you upload your picture and you select a piece of cloth available on the store, then what it is going to do is it is going to transfer that cloth onto your body and show you how you would look if you try that piece of cloth. So your hassle of going to the market is now over. So this is the modern problem on which a lot of people are working, mostly in China. This is called virtual try-on. This problem has not been fully solved, but right now what is being done is that vision models which are able to generate new images, which are, for example, the stable diffusion models, or the generative adversarial networks, or the vision transformers, etc. So these models are being fine-tuned for this specific job. What specific job? Transfer the cloth onto the image of the customer. So this is the job. So the model already knows how to generate new images from the text description. Now it is being trained in a very specific niche direction that it is able to transfer the cloth onto the customer and display. So if that breakthrough happens, maybe you don't need to go to market again, and you can just save your time of hours and hours of roaming about in the market for searching for the good piece of or the perfect piece of cloth that you are going to wear on your birthday party. So that's also fine-tuning. So fine-tuning is actually prevalent in all the machine learning models. So what are the strategies? What are some terminologies? This is, I think that we are already at least 20 minutes past our given time. So we had to finish at 11:30, but we started at 10:40. So we needed to finish at 11:40. Now is 11:50. So I would try that I'll take another online session. And in that session, I would try that I do not start with the questions of the individuals and straightforward go to this technical stuff. And we will try to complete it in one sitting so that anyone who comes on that day is able to actually comprehend what I wanted to convey. Now, if you have any questions, you may please ask, or else we can actually call it a day.
G, anyone? Okay, so I think there are no questions, and that's great. It means everyone has understood. Can you repeat? What exactly do you want me to repeat, please? Can you specify? The fine-tuning process I have actually not described today. It's a six-step process. My screen is still shared. I can show you the last slide. Okay, so this is the process. So this is a six-step process, but I would like to discuss it in more detail, and I would like to give you some strategies through which you can avoid the pain of fine-tuning a large language model and still get some very good results. And I have actually done that in many cases. So Syed Bilal wants to ask a question. Let's hear him out, and then we can call it today. Ji Bilal. Sir, my question is that can we create and build a kind of LLM which can be used in organizations to find the zero-day vulnerability or any other kind of vulnerabilities, especially in the when we give the data in real time? Is it possible to build such LLM? Yes, it is possible to not only possible to build such as an LLM, it is actually quite easy. You don't need to build an LLM per se because there are a lot of language models already available. For example, if you would ask me, I would not go towards building a new language model. I would fine tune a model. So you can actually fine tune GPT. GPT offers you a very easy mechanism through which you can fine tune GPT for your own functions. That model will be yours, and nobody will be able to see your data as per the claims of the company. So you can conveniently and securely use ChatGPT or GPT actually for your own purposes. Similarly, if let's say you can provide the infrastructure, I would suggest that you deploy Llama 3.1, which has 405 billion parameters, and then you try to fine tune Llama 3.1 on your system's logs and cybersecurity incidents. And that's what is going to help you in detecting the zero-day attacks. Sir, how? No, I'm actually my question is how will it detect zero-day vulnerability because there is no data history of that vulnerability available on the internet. Okay. So how is AI gonna point out that vulnerability? Okay, so let me correlate that to your real life. So, for example, you're standing on your terrace, taking a sip of your favorite drink, and down below, if you belong to Karachi or you belong to some other area. Bilal, do you belong to Karachi or some other city? Quetta. Okay. So Quetta is also relevant. In fact, all of the Pakistan is relevant. So if you're standing on your terrace and in your street, you find some strange looking people that you have not seen before. They are on a bike and they're looking right and left with curiosity. What is the first thing that comes to your mind? In the normal world, it would be considered that perhaps these are some newcomers finding the address of some person. But at least it will be known that they do not belong to the area. In Pakistan, in Quetta, in Peshawar, in Karachi, if such a thing is happening,
you would most likely think they are criminals. They are here to conduct some kind of criminal activity, to either snatch a cell phone or to actually enter into a house for their wrongful purposes. So what is it that helps you identify that they are something different from the ordinary? It is actually their behavior. So what happens is that once you are undergoing a cybersecurity incident, what happens is that the modern cybersecurity incidents do not start and end on the single day. Actually, preparations for them are started months and weeks before, and gradually the system is built up, and the actually headway is made, and finally one day you think you get to know that your system is gone actually. So AI actually has the ability to detect these behavioral issues. If it finds that the traffic pattern, some of the traffic pattern is not usual, it is not normal, then it is able to detect that actually there is something wrong with the system, and it can point out that I'm experiencing something new, and depending upon your configuration, your firewall can actually either block them or even try to warn you that this is the kind of activity I'm seeing. I have not seen it before. I think it is suspicious. So you better check whether it is legitimate or not. So this is how actually AI helps you through behavioral analysis. Okay. Okay, so fine tuning, there's someone else also who has asked a question how to do this fine tuning when Streamlit के साथ किया था. So actually the way you do the fine tuning is if you get into the mechanics of things, then you have a very large model which is pre-trained on a specific task. For example, Stable Diffusion 3, which is pre-trained for generating images. What you do is you unlock its final few layers. The model is locked. By locked, it means that you cannot change its parameters. You cannot change its weights and biases. However, in fine tuning, you unlock some of its final layers. So you know that the neural networks are in the form of layers. So once you unlock those final layers, you feed it with new data, you pass through the training process. What that fine-tuning process internally does is it updates the weights and parameters of those final layers and leaves the rest of the layers as they were before. So that is why it is called fine-tuning and not training. Because in training, actually, all of the layers, all of the weights and biases are updated. In fine-tuning, only few of the parameters, weights, and biases are actually dealt with. And that's how it is actually done. It is done through your Python programs. So you load your models, unlock the layers, and then feed in the data to update that. So the thing that you did with Streamlit, that is actually, I would say that that's a high level view of it. That's actually not that actually hides the internal mechanics and the details of fine-tuning a large language model or any model per se. So if you want to get into the details, then the thing that I have described is actually the way to do it. Okay, so now if we have no more questions, let's call it a day, and inshallah, I'll try to schedule the next online session so that we can meet earlier and complete this topic. Thank you, everyone. Assalamu alaikum.